हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं सब लोग? मेरा नाम है अरविंद और हम हैं हैदराबाद बॉयज़ और मेरे साथ हैं सौरभ। हेलो एवरीवन। होप एवरीवन इज डूइंग वेल। हालांकि 2 दिन इंडिया की काफी पैंट उतारी है ऑस्ट्रेलिया ने, so I don't think so Indian cricket fans would be happy, but nevertheless, hello to everyone. या इट्स बिन एन इवेंटफुल 2 days। डे वन एंड डे टू खत्म हो गया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, which is happening at Oval, which is the finals of the World Test Championship series of this last 2 years, 2021 to 2023 cycle, जहाँ पे इंडिया इज प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया और हम ले जाते हैं इंडिया का नो वंडरफुल परफॉर्मेंस, पन इंटेंडेड देयर। बहुत ही खराब, मतलब आई एम अनेबल टू पुट अप वे टू इट एंड विल जस्ट टॉक लिटिल बिट इन फ्यू मिनट्स, बट लेट मी जस्ट गिव अ समरी की हुआ क्या है। सो हियर इज व्हाट हैपेंड। इंडिया ने टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग पे लगाया है ऑन सपोजिटली अ टिंज ऑफ अ ग्रीन पिच on a Wednesday morning of Oval, where it was very sunny. Initially थोड़ा लगा था कि Indian Pacers Raj and Shami can do some damage, and I think that was the whole intent there. But before even we get to that, the team selection of India did select their 11, and surprise तो हमें लगा ही नहीं था श्रीकर परत होंगे instead of Ishan Kishan. So we kind of knew that. The big surprise was Ravichandra Ashwin was left out and Shardul Thakur was played in his place. And then Unadkat also was not kept left out, and Umesh Yadav was brought into the squad, and Ishan Kishan was left out, and Shrikar Bharat came into the squad. बाकी यूजुअल सस्पेक्ट्स थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ से ऑस्ट्रेलिया ने जो हमने प्रिडिक्टेड लाइनअप करा था, एग्जैक्ट लाइनअप आया है। वी काइंड ऑफ प्रिडिक्टेड इट करेक्टली, तो हमें पता था कि दे आर गोना कम हार्ड एट इट विद व्हाट वी हैव प्लान्ड। तो ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट बैटिंग करी। ऐसा लगा था कि शायद इंडिया मेड द राइट चॉइस व्हेन उस्मान ख्वाजा इन अ वेरी गुड फॉर्म गॉट आउट फॉर 0, एंड देन यू हैड डेविड वार्नर एक्चुअली लग रहा था कि फाइनली थोड़े फॉर्म पे आ रहे हैं आफ्टर व्हाट हैज बीन अ टॉरिड सीजन इन आईपीएल इन जनरल ओवर द लास्ट ईयर एंड हाफ. He and Marnus Labuschagne had a partnership of almost 70 runs, and then David Warner got out, which I thought was a very stupid way to getting out, but it is what it is. फिर लंच पे उतरे एंड देन लंच के आते ही मार्नस लाबुशेन गॉट आउट एंड द स्कोर वाज 76 फॉर 3. यहाँ पे स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड आए और इंडिया की कमर तोड़ दी in a one manner. They have taken out India out of the game right on day one. Travis had a century mari or Steve Smith was at 90 odd on day one. In Australia ended the day at 327 for 3. So no कोई और विकेट लिया नहीं है इंडिया ने और they just went batted throughout. Travis had especially played very well. He was playing almost a run a ball, 100 strike rate खेल रहे थे. All the Indian batsmen got out. आज डे टू हुआ and both of them came out. They started hitting runs, and then Travis had got out at 360, 91st over में 6 ओवर of 6 overs, I think 7 overs into the game of today. उसके बाद कैमरून ग्रीन जो आईपीएल के स्वैश बकलिंग स्टाइल से बाहर नहीं आया, and he also got out. And then you had Steve Smith also got out pretty quickly after that. तो ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया ने पुल अप कर लिया व्हेन दे गॉट आउट मिचेल स्टार्क पर 402, तो 402 फॉर 7 था, बट एलेक्स कैरी एंड देन द टेल वैग्ड एंड ऑस्ट्रेलिया एंडेड द डे और देयर इनिंग्स एट 469. ऑलमोस्ट 4 रन्स पे खेला है ऑस्ट्रेलिया ने मोर और लेस पूरे इनिंग्स में। ऐसा लगा था कि इंडिया को बहुत अच्छा टारगेट मिला है यहाँ पे। इंडिया डिड पुल बैक, ऐसा लग रहा था कि फाइनल के ऊपर जाएगा। India ended the sessions today at 151 for 5. रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया, शुभमन गिल ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, बट जस्ट लाइक हाउ दे been how Sharma is doing over the last number of times, he gets a start, he goes out.
Pujara came, and then Shubman Gill. Very weird dismissal of Shubman Gill, and a very weird dismissal again of Pujara. And then Kohli also did not stay long, and it was left with Rahane and Jadeja. So by the time Jadeja, I think by the time Kohli got out of it was 71 for 4 था, तो ऐसा लग रहा था कि ये तो गेम खत्म हो ही गया पूरी तरह से. फिर जडेजा ने थोड़ा पार्टनरशिप निभाई है, एंड इंडिया एंडेड द डे एट 151 फॉर 5. बेसिकली इसके बाद अब बॉलर्स ही बचे हैं. दिस इज द पॉसिबली द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड पेयर इन टर्म्स ऑफ ट्रू बैट्समैन. शार्दुल इज मोर ऑफ एन ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर. सारे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने विकेट्स लिए हैं यहाँ पे, और इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिए हैं इन दैट फर्स्ट इनिंग्स. सो sort of what happened here? Australia looks very comfortable after day 2. India is trailing by 318 runs at the end of day 2. तो आई थिंक वी आर ऑलरेडी इन डे 2, और डे 2 अभी खत्म हुआ है थोड़ी देर पहले. डे 1 के बारे में ज्यादा बात करना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक्चुअली आप देखेंगे पूरा टेस्ट मैच इज नाउ, आई मीन पिवटल आपका डे 1 ही बन गया है, कंसिडरिंग द काइंड ऑफ स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया है. तो अब जैसे आई मीन आपने स्कोर तो बता दिया. आई मीन एवरीवन नोज फॉर द फैक्ट कि ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ की बहुत ही अच्छी बैटिंग रही थी. यू गॉट टू गिव इट टू देम. आई थिंक इंडियन मीडिया और काफी लोग दे आर ट्राइंग टू पुल डाउन द इंडियन bowlers, especially Umesh Yadav, and the selection of Indian cricket team and the management कि अश्विन को क्यों नहीं खिलाया. लेकिन यू गॉट टू गिव इट टू स्टीव स्मिथ एंड ट्रेविस हेड, स्पेशली ट्रेविस हेड. अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि ट्रेविस हेड कुड बी आपने दी दी गेम आपने चेंजर. बोला था एग्जैक्टली वही हुआ है. करियर डिफाइनिंग इनिंग्स लग रही है 163, फर्स्ट इनिंग्स अवे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट इनिंग्स इन या फर्स्ट सेंचुरी इन इंग्लैंड. या तो मेरा एक्चुअली रीजन ट्रेविस हेड का पिक करने का ये था क्योंकि मैंने देखा उनको इंडिया में भी, थोड़े लोग ने देखा होगा, ही प्लेड फ्यू गुड इनिंग्स. लास्ट मैच में तो उन्होंने 100 भी मारा था, लेकिन दैट वाज अ वेरी फ्लैट डेड पिच. लेकिन उन्होंने टर्निंग विकेट पे भी अच्छी इनिंग्स खेली थी, 40 वगैरह की. एंड आई हैव सीन हिम प्ले वर्सेस इंग्लैंड इन ऑस्ट्रेलिया, वर्सेस साउथ अफ्रीका इन ऑस्ट्रेलिया, and he has basically played those pivotal innings when Australia was struggling. तो मेरा एक रीजन ये था कि ये, और बात चल रही थी कि ओवल की पिच ऑस्ट्रेलिया जैसी होगी, तो मोस्ट पॉसिबली आप ऑस्ट्रेलिया की विकेट सोच रहे हो तो ब्रिस्बेन की सोचो. ब्रिस्बेन की पिच अपार्ट फ्रॉम बीइंग क्विक, व्हिच इज लिटिल मोर क्विकर देन ओवल, वो थोड़ी सीम और स्विंग करती है. अगर आपने लास्ट मैच देखा होगा जो ब्रिस्बेन में हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ, इट वाज अ nightmare. I mean, that possibly was rated one of the worst pitches that करेक्ट. Australia played in down under. तो अगर वैसी पिच में वो इतना अटैकिंग खेल सकते हैं विद द लाइक्स ऑफ नोकिया, रबाड़ा, तो मेरा लग रहा था कि यार यहाँ पे भी ये अच्छा खेल सकते हैं, और ऑलमोस्ट वही हुआ. तो you got to give it to Steve Smith for staying there and Travis Head for for his attacking innings. Did India made a mistake? I think this is something for a debate. हम आप भी इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं कि did they do a mistake on the hindsight? I think on the hindsight it always appears कि भाई Hindsight is always toss beautiful thing, right? beautiful. अगर लेकिन अगर अश्विन शार्दुल ठाकुर took 2 wickets and he bowled 23 overs, 83 runs. If Ashwin was there and Ashwin went 24 overs, 90 runs, 1 wicket, would you classify Shardul Thakur to be a failure? I don't think so. अच्छा, We don't know. शार्दुल ठाकुर से पहले did the Indian team and the management made a right decision to bowl on the hindsight? I don't know. It looks like I probably felt like a pitch to ball. उनको लगा कि Indian bowling has done well. तो हाइंडसाइट में देखा जाएगा तो अगर बोलोगे कि 469 मार दिया है, यू विल से कि हाँ, तो मैं इस पे बस एक ही पॉइंट बोलना चाहूंगा. आई थिंक समटाइम्स यू गॉट टू टेक ब्रेव कॉल्स. मैं यहाँ पे द्राविड के बारे में स्पेसिफिकली एक दो वाक्य बोलना चाहूंगा. गोइंग बैक टू 2002, आई थिंक जब गांगुली कैप्टन थे, हेडिंगली में एक मैच हुआ था. हेडिंगली इज द मोस्ट सीमिंग फ्रेंडली पिच करेक्ट. इन इंग्लैंड, और वहां पे गांगुली और द्राविड आल्सो वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द टीम मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि उस टाइम में तो काफी एक्सपीरियंस आ गया था द्राविड को. एंड द्राविड, सहवाग, दे प्लेड अ पिवटल रोल इन डे 1,
scoring, I don't know how many runs. I know Sehwag scored a century, and if Sehwag has scored a century, India must have, almost scored 275, 300 plus in the day one. I'm not able to recollect the exact score on day one. तो वहां पे एक ब्रेव कॉल दिया था इंडियन टीम मैनेजमेंट ने उस टाइम पे टू बैट फर्स्ट. So could they have taken that decision, brave decision now? I do not know. तो आई डोंट नो ये 2002 था या फिर 2003 वर्ल्ड कप के बाद था. Is या this वाज the one दिस you're द मैच? talking? या आई थिंक दिस इज द मैच. या यार, तो सिर्फ सहवाग ने बैटिंग नहीं की थी. आई थिंक राहुल द्रविड़, हाँ राहुल द्रविड़ ने शायद. Tendulkar दिस got इज out. हेडिंगली. Yeah, this is Headingley, the Leeds. This is heading Leeds. Yeah. So yeah, you can see. So they took a very brave call then. और उस समय राहुल द्रविड़ थे. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है. आई मीन 2 साल हो गए शायद ऑलमोस्ट राहुल द्रविड़ को. वो राहुल द्रविड़ दी प्लेयर एंड दिस राहुल द्रविड़ दी कोच में डिफरेंस है. What exactly is the difference? That's everyone for to debate and talk about. लेकिन he doesn't, and the entire world was waiting, at least the entire India was waiting for Rahul Dravid to become the coach. लेकिन उनके results थोड़े, मुझे थोड़े डाइसी लगे हैं. थोड़े decisions भी questionable लगे हैं. तो आई थिंक, या आई मीन यू कैन ऑलवेज डिबेट कि यार उनको फर्स्ट बॉलिंग या बैटिंग करनी चाहिए थी. लेकिन हाँ, कमिंग टू द सेकंड पॉइंट व्हिच यू वर टॉकिंग अबाउट अश्विन और शार्दुल, यार मेरे पता नहीं, मतलब इंडियन टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है कि टेस्ट मैचेस में आपका आपका क्या, वर्ल्ड का नंबर वन बॉलर है. He's number one आई player, नो आई spinner मेड in अप. the world. He's the number one या, bowler in the world. You don't take नंबर वन बॉलर it's इन द. in the number one bowler in the world. Australia will not. I mean, it's like, okay, we're going to Johannesburg. It's a green top. I will not play Shane Warne because I want to play, I don't know, some other नेवर हैपेंड. seamer. It would never happen. Why would you do that for your number one bowler who also happens to bat a little? Sure, he's या, not a number 11 player. It's not that Shardul Thakur, yes, he brings his own this thing. But would you take out your number one bowler? Or would you take out someone else? I don't know. I think in the hindsight, they said hindsight is a very beautiful thing. I think it was a very brave call, and I think it backfired. या, या. या तो So मतलब मुझे वो समझ में नहीं आया यार. मतलब अश्विन को, मतलब आप अगर ऐसा ही है तो मतलब इसका मतलब है कि आप कोई बैट्समैन है जिसके जिसके मन मुताबिक कोई पिच नहीं है, तो आप उस बैट्समैन को, टॉप बैट्समैन को आप नहीं खिलाओ. we'll come to the batsman in just a minute, but I don't know, wrap up the Australian innings and the Indian bowling there for day one and day two. Aj, you have to give credit to Australia, as you rightly said. They were put into the bat. Unko laga ki there'll be a seaming conditions and all. Okay, Usman Khawaja got out, but really, I mean, terrific effort by everyone, including Alex Carey today, who scored a precious 50 runs, almost 50 at a strike rate of 70. I think Australia would be very happy with what they have done, 469. या, आई थिंक 327 जब 27 बन गए थे पहले दिन, आई थिंक द बेस्ट केस सिनेरियो इंडिया के साथ यही हो सकता था कि वो नेक्स्ट 7 विकेटें 100 से 150 रन के बीच में ले लें. They did well. और वही India लिया. did well. इंडिया डिड वेल, लेकिन अब पहले दिन में आपने 90 ओवर से भी कम, आई थिंक 85 ओवर्स में इन्होंने 327 रन मार दिए थे. आई थिंक फिर वो आपका कैचअप ही चल रहा था. इवन दो आई थिंक इंडिया का सेशन रहा लंच का जहां पे उन्होंने 4 विकेटें ली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वहां उस सेशन में भी 24 ओवर में 100 रन बना दिए. 98 Correct. 99 रन बना दिए थे, Very true. Very विच true. इज क्वाइट सिग्निफिकेंट. तो 327 के बाद वो ऑलमोस्ट एक कैचअप टाइप हो गया था. सो आई थिंक फर्स्ट डे जो खराब गया इंडिया के लिए, आई थिंक उसके बाद से सेकंड डे में भी आप देख रहे हैं But I क्या हुआ felt है. no, I'm not talking about India's batting and just the day two ending. आप आर्ग्यू कर सकते हो कि 469 ज्यादा हो गया है, but they've done well from where they were, 327 for 4. But that response from Indian batting, I think that is a bigger question than Indian bowling. For me now, the question is not whether Ravichandra Ashwin did not play and India made the wrong choice of batting second. For me, the biggest concern is that top four.
top 5. Chalo, I'll take out Shubman Gill in this. He's new. I'll keep him out for this thing. Rohit Sharma, Cheteshwar Pujara, Virat Kohli, Ajinkya Rahane. If you look at India's, and I'm just pulling up some stats here. If you look at India's, what do you call? If you look at India's test number cycle, top, yeah, the test cycle, mein, if you look at the number of records, the most number of runs, mein, Kohli is right between Sehwag and Ganguly. He's got 8,000 runs. You got Pujara right behind him at 7,100 runs. A little further down, close to 5,000 runs, and above Dhoni, by the way, is Rahane. And a little further down is around 3,500 runs is Rohit Sharma. Aapke top 4, your top order, you can say, are among the elite in India's test cricket. They are in the records books of, if you look at it, they are probably in the top 25 in the history of India. But if you look at little bit deep dive, एक थोड़ा सा पील करोगे, and मैंने क्या किया है, I pulled out the India का record of test matches in scoring, total score में. This is the entire history of India since the India started playing test cricket. Thank you, Cricinfo. I mean, amazing stats page. I've highlighted, मैंने last 4 years का high scores देखा है, where India did, let's say, more than 485, which is kind of, what 470 is, what Australia bet today. आप देखोगे इसमें blue जो highlighted है, it's hardly any. Because it also says that last पिछले 4 सालों में इंडिया ने इतना ज्यादा रन्स बनाए ही नहीं है, और अगर बनाए हैं तो वो देखो कहाँ बनाए हैं. इंडिया का हाईएस्ट स्कोर इन द लास्ट 4 years was 600 runs against South Africa in Pune, so वो इंडिया में रहा. And then they had another one against Sri Lanka in Mohali. That was in 2022. Then they had a 571, which happened this year, by the way, was in Ahmedabad. And then they had one against South Africa, Vizag, just 500 runs, again 2019. Then against Ranchi, then in Indore. That's it. They haven't scored more than 485 runs in last 4 years abroad. And if you look at it, the lowest scores in the history of India in the last 4 years, top score is the lowest India ever scored happened in last 4 years. 2020 Adelaide game away. 78 इंडिया में इंग्लैंड के साथ happened in 2021 Leeds. And then you had one more low score, चलो इस साल ऑस्ट्रेलिया के साथ होम में इंदौर में जो भी हुआ था पिछला गेम मार्च वाला टेस्ट. And then you had one more in Christchurch which happened at 124. So, and then one was England ने एक और बार करा है अहमदाबाद में, which was 145, and that was it. So stats ये बता रही हैं कि, and data is never wrong, data is telling you what's reality. In the last 4 years, India has never scored more runs away abroad, and India has consistently scored lowest runs, amount of runs record books में आए हैं abroad. अगर आप देखोगे, एक और चीज मैं दिखाना चाहता था, just a second. Virat Kohli, a very good example, a rock star superstar Indian person, in the Indian cricket ke, captain रह चुके हैं, and then now he's this thing. If you look at his test performance in the last 3 years, since 2019 के बाद, look at his performance of test matches. 3 matches he scored strike rate of average of 19. 11 matches he scored an average of 28. You don't hit a century, fair enough. 6 matches you played, 265, average of 26. And 5 matches you had a 311, उसमें एक 186 था, वो भी इंडिया में रहा है, an average of 44. So basically 25 match हो चुके हैं since 2020 if you look at it in total, and he hasn't crossed Correct. 1,000 runs. If my maths is right. He hasn't, well, barely 1,000. Barely 1,000. Yeah, Come to it's think gone of beyond. it, in the 2016-2017, he was closing 1,000, 1,200 per year. Per year. If you look at Cheteshwar Pujara, another India stalwart, India के जो wall बोले जाते हैं, Dravid का, future, the Dravid's future there. If you look at him in the year 2020 से लेके, 4 matches 163, average of 20, 14 matches 702, average of 2028, no centuries those 2 years.
5 matches, 409, 1 century. I would bet that's one of the India centuries. And 5 matches, 154, an average of 20-25. Another scenario where they have scored less than 100 1,200 runs. And here is a person who was scoring 1,100 runs just for the fun in 1 year. Third person was Ajinkya Rahane. 2020 से लेके 272 in 4 games, average of 20-38. 2021 में he had an average of 20. 13 matches खेल के not even score a century and it was 479. 2 matches and you only played 2 matches. Did not get selected last year much. Average of 17 and now this is still at 29. And looking at our captain Rohit Sharma in the last 4 years, this is his state. 5 matches, 56. Chalo, he had a good 92 average. Last 3 years, 11 matches, 900 runs, 47. 2 matches, 90 runs, 30. 5 matches, 257 runs, an average of 36. When your top 5 players की average 50 भी नहीं है, जो एक सेंचुरी नहीं मार पा रहे हैं, जो एक away from India are not able to hold it together, आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैचेस जीतोगे और बॉलर्स विल डू ऑल द ट्रिक? जसप्रीत बुमराह होते, ऋषभ पंत होते तो भी यही हाल होता, बिकॉज इंडिया टॉप ऑर्डर, द टॉप 4 हैव नॉट डन वेल. एंड पिछले 3 सालों से ऐसा लग रहा है कि द लोअर ऑर्डर हैज बीन डूइंग वेल. बीट ऋषभ पंत कर रहे हैं काम, बीट अक्षर पटेल डूइंग इट इन इंडिया, बीट रविंद्र जडेजा डूइंग इट फॉर इंडिया, बीट रविचंद्र अश्विन hitting a century, be it Shardul Thakur, be it Washington Sundar, playing at Brisbane. Your number 5, 6, 7, 8 are saving your batting and are doing the bowling. They are doing everything. Aapke top 4, top 5 are not doing the work they are supposed to do. That's true. That's true. I think we brushed upon this, especially हमारी जो Indian top order batting. I think we brushed upon when Australia came to India. Do you think one of the reasons why Indian batting, क्योंकि ज़्यादा India matches, test matches India में खेलता है, 50% of their matches would be in India and the 50% of the matches would be away. Do you think, I know you did see couple of scores here and there versus South Africa, especially, जहाँ पे उन्होंने 500 से ज्यादा रन मारे थे 2 बार. And I know this, the strategic reason behind that, क्योंकि South Africa की bowling उतनी वैसे भी weak है. So they Correct. basically gave, those traditional Indian pitches which were accustomed to before 2014. जहाँ पे first 2 दिन आप मारो बहुत, third day जाके, fourth day जाके ball turn होती है, and that's how it was. तो आपको लगता है कि Indian batting, since आपने इतनी ज्यादा spin friendly pitches बना दी हैं इंडिया में, and they are very spin friendly, मतलब आप बोल सकते हैं कि जडेजा थोड़े रन्स मार रहे हैं, ऋषभ पंत मार रहे हैं, लेकिन they are, I mean, they even find it difficult to score there. मारते हैं लेकिन they even find it difficult. Yeah. They grind it out, ball थोड़ी पुरानी हो जाती है, what not. लेकिन इतनी खराब पिचेस जब आप रेगुलरली फेस करने लगते हो और आप नहीं स्कोर कर पाते, कॉन्फिडेंस, somehow you lose that confidence of, possibly scoring. I totally agree. I mean, with the kind of pitches they have played over the last 3-4 years, आपको results, मैंने तो अभी home and away देखा ही नहीं था. वो home and away भी नीचे था, and you can see the away performance would have been absolutely abysmal. I think India's batting is a real crisis, which is getting masked by their lower bowling order, by their bowling. Lower order and their bowling. Yeah. ये हमने ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में भी हमने देखा था, एंड हमने पिछले वाले इसके सीरीज में भी देखा हुआ है, एंड एविडेंट है कि दिस इज अ क्राइसिस. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट. पिचेस ऑफ इंडिया, यहाँ आप इंडिया में वही है, घर में शेर बाहर बिल्ली वाला हिसाब है. एंड आई वुड ब्लेम IPL too. That elephant in the room. I think that's the elephant in the room. I think IPL has effectively dismantled India's test match skills and capabilities.
People don't know how to sit up and wait for the ball and give respect to ballers like Scott Bolland, and if they're bowling a full length delivery and then trying to go through it. हमने वो कैमरन ग्रीन का शॉट देखा था, वो आईपीएल का शॉट था which he got out, and effectively that is what IPL is turning you into. And I'm sorry to say IPL has not worked very well for India. इंडिया Yeah, जब I से think आईपीएल शुरू किया है, क्या एक टूर्नामेंट जीता है? नहीं जीता है। T20 तो T20 तो नहीं नहीं जीता जीता है। है, T20 तो नहीं जीता है, लेकिन हाँ बोल And सकते हैं ज्यादा टूर्नामेंट्स नहीं जीता है, बारिंग द 2011 वर्ल्ड कप, और it's फिर been बाद 12 में years since you won a 12 years trophy. Who trophy. are you Yeah. kidding? Are you Yes. really a top team? No, you're not. England is a top team in the world right now. I would put England number one. Australia would be at number two. They just won the T20 World Cup. India would be a maybe three because of the amount of games you play. But हाँ, तो अब आई मीन आईपीएल के, आई मीन जो हम लोग बात कर रहे थे, दिस शेड्यूलिंग, आई थिंक जो शेड्यूलिंग हो रही है आईपीएल की, और हमने ऑफलाइन इसके बारे में बात की थी, आई वाज टेलिंग यू कि देयर हैव बीन 3 to 4 ओकेजन जब आईपीएल हुआ है और उसके बाद कोई आपका मेजर टूर्नामेंट है, इंडिया हैजंट डन वेल। और ये बात भी हमने वी ब्रश्ड अपॉन दिस इन आवर अर्लियर वीडियो व्हाइल वी वर रिव्यूइंग दिस वन ऑफ टेस्ट मैच, कि is it going to be the case of undercooked or overcooked? Undercooked on the side of Aussie because they haven't, largely जो players हैं वो आईपीएल में खेले नहीं हैं, और they haven't got any sort of match practice, और इंडिया का था कि भाई वो आईपीएल खेल के आए हैं, तो does having some amount of match practice better than having no practice at all? मेरा I उस think टाइम पे लग रहा था, Australian और आई bowlers, थिंक आपने, हाँ, और एक मैंने आपने ये ट्वीट बात डाला बोली था थी मुझे, करेक्ट। आपने ये बात बोली थी कि what if they get certain bad habits of IPL and they carry it over to the test match? वो तो होगा ही। और अगर आप देखेंगे जो डिसमिसल्स हैं, हालांकि आई थिंक कोई भी इंडियन बैट्समैन ऐसे आउट नहीं हुआ which kind of gave that indication they were throwing their wicket away, लेकिन आप देखेंगे रोहित शर्मा, आई थिंक रोहित शर्मा का वही एक डिलीवरी, मतलब एक पैटर्न सा है, लेफ्ट आर्मर तो नहीं है, लेकिन जो इनकमिंग बॉल है, he kind of struggles with it. Kohli got a snotter. I think you can say that possibly was, Kohli was yeah, you unlucky. want to say something? हाँ, unlucky to get such a brute of a delivery. लेकिन उसके अलावा आप यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन द जजमेंट ऑफ द बैट्समैन, गिल हो सकते हैं, लेकिन अगेन गिल, आप यू जस्ट हैव टू टेक गिल आउट ऑफ द इक्वेशन, इट्स हिज फर्स्ट टूर, It's his there have first been tour. great batsmen who have come to England, they haven't been able to solve the puzzle of England in the very first tour, so Correct. you got to And give for the it. 14 balls he played well. It was He looked unfortunate. good. Yeah. So Yeah, and he looked uh, good. He looked good. yeah. Yeah, yeah, yeah. I am Pujara. not Pujara, Yeah. Kohli, chalo, Kohli. You have to still question Kohli, even though he got out like this. Rohit Sharma, Pujara, I mean, the top order needs to deliver. And I think Right, that is मुझे a ना bigger ऐसा, concern now for और India. मैंने कोहली की काफी इनिंग्स देखी है, आई एम प्रीटी श्योर आई मस्ट हैव वॉच्ड 90% ऑफ इट। मुझे ऐसा याद नहीं आता कि ऐसी बॉल, आई नो इट वाज अ वेरी गुड बॉल एंड ही मस्ट हैव रिसीव्ड दीस काइंड ऑफ बॉल्स इन हिज करियर, लेकिन मुझे ऐसा याद नहीं आता ऐसी बॉल पे वो ऐसी तरह आउट हो, यू नो। So it also kind of reflects where he is possibly currently in his career. I know he is coming with huge chunk of runs in IPL, और उसके पहले बांग्लादेश सीरीज एंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी शायद 100 मारा था in the one days. Yeah. I think my statement, and I will end it with this segment, and we'll wait to see how India recovers from this thing. Is I think IPL did more harm to India than it did good from a test match point of view. Absolutely. Absolutely. And I think England and Australia to some extent have figured this out, which India has not figured it out. Right. Right. The two things which England and Australia do it well, they do it very well. एक है उनकी T20 team is a very different team than their test team. They effectively have three teams. एक है टेस्ट टीम जो वनडे नहीं खेलेगा, पॉसिबली T20 भी नहीं खेलेगा. There is a one-day team which will not play test. They will play, some of them will play T20, but some of them are ODI specialists, and they will have a completely different set of T20 players.
who will not play other formats. Right. And ये जो T20 के players में वाले में format में है, these are the players also move to IPL, CPL, PSL to hone their skills. So by the time they play their T20 blast in England, they would have played in PSL, they would have played in IPL. तो कल को कहीं T20 tournament हुआ in any other part of the world, A, they are familiar They're with well T20 prepared. game, they are well prepared. B, उन्होंने पिचेस देख लिए, उनको क्राउड पता है क्या है, उनको लोकल कल्चर, कस्टम, स्टाइल सारा पता है because they played a local tournament in that country in some form of other. या उनकी टीम में किसी ने खेला होगा, so they kind of have that knowledge. Australia has done the similar thing in terms of T20 in their ODI test players. Some of the test players, and that's a good thing you mentioned, right? Marnus Labuschagne, ये जो बॉलर्स गए हैं, हेजलवुड तो फिर भी वापस आए हैं, स्टार्क, कमिंस, they stopped playing IPL. They said, I'm not playing IPL because they took a rest. They recovered. वो रनिंग जोक था ना कि स्टार्ट ऑफ द गेम में अरे इन लोगों ने तो मैच से बॉलिंग ही नहीं करी है, सो दे थॉट दे विल बी रस्टी. आई आल्सो फेल्ट कि शायद इंडिया को लगा दे विल बी रस्टी, and they felt that you could take an advantage of it, bowl them out quickly, and then go for the kill. It would have been good for batting the next 2 days and all of that. That could also be the ploy there. But उनकी bowling देख के लगा नहीं है कि they were rusty, they were well rested. And I think they are very well prepared for the summer because उनके लिए ये Ashes आ गया है. And this is the precursor. So I think India के लिए it's high time. They should start to realize not to stretch their players in the same format across all formats, across the players. If I look at the overlap of Indian team, 50% would have been the same team across the formats. And I think वो दिख रहा है कि you are आप सब में jack of all trades हो, but you're master of no format. And I think this year it'll get telling when you don't win your World Test Championship final. जो आधी सी गेम आपने इंडिया में आपने जीत के आ गए हो, let's face it. You go to Bangladesh and Sri Lanka and try to squeeze in the away wins. You will not win the World Cup trophy because the way you're preparing, and that will be the final coffin in the nail for India. If they don't win the World Cup at home after the T20 debacles, it'll raise the questions on. I don't blame cricketers here. I really don't. They are playing. They are forced to play. They're playing for the country. I blame the management, the BCCI, the entire system, the BCCI, कि उन्होंने एक पैसे बनाने के चक्कर में आपने सब जगह पैसे बनाने तो सब जगह आपने भेज दिए. आपने एक वो फॉर्मेट नहीं लगाया जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने क्रैक कर लिया. राइट. और मतलब बीसीसीआई का एक और चीज है, आई मीन ठीक है आपके पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक जो ये भी हमने थोड़ा टच किया था कि यार आप टेस्ट मैचेस के लिए क्या कर रहे हैं. आप इतना आईपीएल कर देते हैं, एक ओवर सैचुरेशन आ जाता है जब भी कोई टेस्ट मैचेस होता है इंडिया में. हार्डली, हालांकि थोड़ा सा चेंज हुआ है, हल्का फुल्का लोग आना स्टार्ट किए हैं, लेकिन आपका जैसे आप कंपेयर करेंगे ऑस्ट्रेलिया में या फिर इंग्लैंड में, जो क्राउड आता है इंडिया में वो क्राउड नहीं आता है. और आपके जो चॉइसेस हैं वेन्यू के, यू हैव दिस रोटेशन पॉलिसी, यू विल हैव टेस्ट मैचेस इन धर्मशाला. धर्मशाला में कौन टेस्ट मैचेस है? यू डोंट इवन हैव टेस्ट मैचेस बीइंग प्लेड एट प्राइम सेंटर्स, जहां पे भी स्ट्रगल है कि क्राउड नहीं आते. तो व्हाट आर यू बेसिकली डूइंग टू सेव द मोस्ट सेक्रेड फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट. और फिर ये एंटायर आईपीएल जैसे आपने बोला है कैश काउ है, लेकिन कैश काउ के होने के साथ आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है काफी टाइम से. जस्ट लाइक्स ऑफ जसप्रीत बुमराह, थिंक मतलब कितना स्ट्रेच किया उन्होंने अपने आप को आईपीएल में, आईपीएल India's के लिए फिट होने greatest के लिए. bowler. Yeah, India's greatest bowler, and he is nowhere there. I think whenever he comes back, I don't think so he's going to be the same, and he has to make a choice which format he's going to give up, and he's not going to give up IPL. वो तो है. And you He's did going to not, give up. We know what he's going to give up. He's going to give up tests. he's going to give up tests. Hardik Pandya has given up tests, right? I mean, Hardik So Pandya एक time पे, India needs to figure out a test team completely together, different. इनको अलग grooming करनी चाहिए. And I think it is very difficult for us to say because IPL से ही limelight मिलता है, IPL से ही पैसा मिलता है. Why would a player say कि मैं IPL नहीं खेलूंगा, मैं टेस्ट खेलूंगा?
नहीं मतलब see I get IPL is important, you know, IPL is kind of bringing the other dimension to test cricket जो baseball है, you know, somewhere, you know, England players would have benefited from IPL and the other leagues. I know India doesn't play, Indian players doesn't play, they don't play in That's Indian another thing leagues, we लेकिन have. They don't play other leagues. तो उनको बाकी कंट्री का कंडीशंस भी नहीं लेकिन आते. एक है कि अब आपने आईपीएल का विंडो 1.5 महीने से या जो भी था, 1-1.5 महीने से थोड़ा पहले कम था, आपने उसको 2 महीने कर दिया है, तो उसके पहले थोड़ा प्रिपरेशन रहता है, तो ऑलमोस्ट आईपीएल का एक विंडो हो जाता है 3 महीने का। तो आप 3 महीने, फिर आप टेस्ट मैच है तो आप टेस्ट मैचेस में आपको प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलता है, सो यू कैन जस्ट सी यू नो द स्नोबॉल इफेक्ट ऑफ आईपीएल। आपके पास टाइम नहीं, the team does, they do not have time to spend the time with their family, they don't have time to prepare। आपने इतना जैम पैक कर दिया आप आईपीएल को, और सोच रहे हैं, सुनने में आता है कि they want to have more matches। मतलब अगर आप ऐसे ही चलते रहा तो यू नो Unless until they change their style or figure it out, I don't think India will get financial success. India will get IPL success, but Indian team will be the suffering team where trophy नहीं मिलेंगी. पता नहीं है, would it be right to compare IPL to EPL? I think EPL is the most famous and the money garnering league in the world, if I'm right, Yeah, so लेकिन England doesn't do well। yeah, I think you see the same thing. England has not won any trophy since Since 1960s, 1966. yeah। They had really good players. Same problem. वहां पे अलग प्रॉब्लम, वहां it mirrors the same aspect of it because it's the most हाँ followed league and everything. One thing they do, uh, Christmas के time पे all the football leagues go for a holiday. England will play because I need to make money during Christmas week, the New Year week, because it's a holiday time. I want people to go out and watch the game. Fair enough. Great. Make the money. What happens is the World Cup year जब होता है, usually Qatar was a very off one. World Cup year is usually right after the season. Like May में season खत्म हो जाता है, World Cup starts in June. Every other team, every other countries play, other leagues have got a 3-4 weeks rest in January. So the bodies are a little bit better. And by the time they get to the World Cup, they've gotten the right momentum, just like England, but they also have the rest along with it, which they got in the mid-winter break. yeah And you see the results. You will see Germany winning multiple times, or Spain winning few times, Brazil winning. Again, it's अगर आप पैसे ही सोचोगे तो नतीजा यही होगा. You will be successful. You will be the number one league in the world. You will be the most famous league. It's the richest. It's the ultimate league. Everyone wants to play in EPL. But your national team ambitions are going to suffer because you kind of sacrifice that. I think India cricket is getting to the point where I feel. I mean, I'm not talking about this one particular game. आपको मतलब मैं stats दिखा ही रहा था. Rohit Sharma, Pujara, Kohli have all declined in the last 4 years, and that decline also has happened, dramatically. And आई थिंक and आप आई थिंक कोई क्वेश्चन कर सकता है, कोई क्वेश्चन कर सकता है, अरे आईपीएल तो पहले भी था, 2008 से है, तो 2016 तक तो ये खेल रहे थे, तो बट वही है ना कि बॉडी हैज स्ट्रेच्ड. Now they are no longer the mid-20-year-old guys who are, hot-headed and young and all that. All of them are past 30, past their peak. So the body has deteriorated very quickly for them, and they are no longer at the level of international play where they need to score at a, centuries and all of that. And वो दिख रहा है. या आई थिंक और एक और चीज है, मतलब आप देखिए 3-4 साल से आपने जो टॉप ऑर्डर के बारे में बात की है, इसका बलि का बकरा आपने बनाया था पुजारा को फॉर सम टाइम, ही वाज आउट ऑफ द टीम एंड रहाने आल्सो वाज आउट ऑफ द टीम। आई थिंक पुजारा को रिटेन किया था एक टाइम पे, रहाने का आउट किया था, पहले एक बार रहाने का आउट कर चुके हैं एंड पुजारा केम बैक टू द टीम। पुजारा और रहाने एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम दे बीन मेड द स्केपगोट। Can they do लेकिन that for आप Rohit Sharma आप and आप Virat क्वेश्चन कर Kohli? सकते हैं केएल राहुल, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि आपने बताया नहीं क्योंकि वो इस टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं, जो मोस्ट लाइकली अगर होते तो शायद खेलते, और मोस्ट लाइकली फ्लॉपी होते कंसिडरिंग द वे ही इज प्लेइंग। केएल राहुल, फिर आप बोल सकते हैं कोहली, रहाने, पुजारा, आप बोल सकते हैं चारों को टीम से एक साथ निकालना चाहिए था, लेकिन बलि का बकरा बनाया गया था रहाने और Nah, पुजारा को। Indian management won't have that guts to do it.
ठीक है, देखते हैं. I mean, But I let's guess see. I think I guess India will not learn yet. I have a feeling this World Cup year they may learn, because I am based on this. My predictions are Indian batsmen will still struggle in the World Cup, even though it's a home World Cup, and we will see probably some other team winning. I think India के पास World Cup ODIs में एक advantage है. They have good two spinners, which is Kulcha. वही I मैं बोल रहा हूँ think ना. आप वही घुमा फिरा के वही बोल रहे हैं ना. आपके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. अगर वही हाँ, मतलब करना है बैटिंग तो थोड़ी. आपके टॉप 4 क्या है? आई थिंक ओडीआई एक सेफ कुशन है थोड़े से बैट्समैन के लिए, हमारे इंडियन बैट्समैन के लिए, बिकॉज T20 का एक जो है कि भाई बॉल आई है तो मारना ही है, वो प्रेशर नहीं रहता है, इतना ज्यादा नहीं रहता है. और टेस्ट मैचेस का एक प्रॉब्लम है कि पिचेस, मतलब आप इंडिया में खेल रहे हो तो डॉक्टर्ड पिचेस में खेल रहे हो, बाहर खेल रहे हो तो थोड़े डिफिकल्ट कंडीशंस हो जाते हैं आपके लिए. तो इंडिया में आप खेलेंगे तो इतना you'll have favorable conditions for batting, लेकिन आपके आपके पास T20 जैसा एक प्रेशर नहीं रहेगा कि आपको हर एक बॉल पे मारना है. तो इट स्टिल माइट हेल्प इंडिया. आई स्टिल बिलीव इंडिया इज नॉट द फेवरेट. मुझे लगता है पर्सनली लगता है इंग्लैंड एंड Yeah. पाकिस्तान मे बी Yeah, बेटर. we'll talk ODIs later, but let's come ये back to this लेटर one. We'll end it with this one. डे 3. Yeah, what does it look like for this game? Day 3. आई थिंक Coming देखिए, back. मैच तो अभी खत्म नहीं हुआ है. यू स्टिल हैव रहाने, भरत है, फिर लॉर्ड भी है, लॉर्ड बाकी है. मुझे I think लगता है first इंडिया first target for India is 269. 216 है. हाँ, आई थिंक अगर 300 अगर इंडिया मार लेता है, दैट बेसिकली मींस दे विल बी प्लेइंग ऑलमोस्ट 1.5 सेशन. आई डोंट थिंक सो इवन इफ दे डोंट स्कोर फॉलो ऑन. अगर मेरे हिसाब से नहीं करेगी, अगर 269 270 नहीं भी मारती है, मुझे नहीं लगता है ऑस्ट्रेलिया आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड इन 2002 देयर 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 आइडिया विद रिस्पेक्ट टू फॉलो ऑन हैज कंप्लीटली चेंज. तो फॉलो ऑन तो नहीं करेंगे. They'll want to तो make आई India थिंक bat third, fourth again. they're going to match there. Yeah, that is for sure. So it's a precarious situation for India. I think 300 बना ले तो बहुत बड़ी बात होगी. It's very far away. लेकिन it's possible भी बोल सकता हूँ, looking at the history of India versus Australia. लेकिन ये pitch is playing tricks now. I think second It's day gonna आते be आते difficult. Tomorrow is the आते आते last day दिख of गया था sunshine, कि I think. Day 4 is या. cloudy, I think. हाँ, मतलब तो. और मुझे If लगता India है has to save this tomorrow, they have to play out of their skin, play at least 2 of the 3 which is sessions. which is unlikely, If they can, अगर आपको वो कोहली जैसी बॉलें मिल रही हैं, या फिर ट्रेविस हेड भी जब 90s 100s में थे, वो शॉर्ट बॉल इज डिफिकल्ट. और अब तो थोड़ा अनकंसिस्टेंट बाउंस भी हो रहा है. आई मीन शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ से बॉल ऊपर आ रही है, तो इट्स गोना बी डिफिकल्ट फॉर इंडिया. आई थिंक इट्स काइंड ऑफ रिटन ऑन द वॉल्स पॉसिबली कि ऑस्ट्रेलिया इज गोना टेक दिस अवे. लेकिन आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ इंडिया शोज देयर doggedness which they have shown in the it, it, past against it's on Australia. these two guys. It's on these two guys and Lord. I mean, Rahane has to stay for India to have any chance of surviving this. Because Right, Australia का game right. plan very clear है. I think you are right. वो follow on नहीं करेंगे. वो तीसरे innings पे आएंगे and the game would be Travis Head may open with David Warner and say go and smash the get a quick fire Right. 200 हो सकता है. 30-40 overs में 200 दे दे and give a day 5 to India. Right. Right. And and I or think I and can. day 4 and day 5. I think Australia का very very clear plan लग रहा है. The only way Australia's plan, if I know, see India has the best chance of drawing this with the kind of batting they've I done. think you can look at a scenario where possibly Australia would be having a lead of 450 plus tomorrow. Can have, depending how India bats, and if India gets kettled somewhere around 200 250 के बीच में, that leaves with almost 200 plus lead. और अगर ऑस्ट्रेलिया 200 रन भी मार लेती है 2 सेशन में या 1.5 सेशन में, तो यू आर लुकिंग एट अ 400 प्लस लीड. और वो Yeah, भी but 3 ही दिनों. Australia is not going to give on the 4th morning to India. Australia would give it if they want to do it. हाँ. They'll give it a 4th No, lunch I'm just talking and कि do it. मोस्ट लाइकली सिनेरियो क्या हो सकता है थर्ड डे को. I तो think आई थिंक ऑस्ट्रेलिया yeah, स्टिल बैट Rahane. करेगी. Yeah, Australia रहाणे will is bat.
Yeah. I think India will try to. India's goal is first 269, get the follow on, so that was psychological factor. निकल जाएगा कि lead 200 से कम है. And then try to get as close as 469. That's all they can do. Yeah. Yeah. All right. Very fascinating game. I actually enjoyed this test cricket. I am much better than IPL. I don't know why people enthuse IPL. This is the real cricket. नहीं, I think ये मैच होने के बाद एक डेफिनेटली एक एक डिस्कशन कर सकते हैं हम दोनों about the discuss the elephant in the room, IPL players, priority of BCCI. It makes for a fun I episode. think we did well today. We can expand on this later for sure. Yeah. Cool. All right. Please hit that like button. Please subscribe. I think we had a very good discussion today, not just the game, but generally the state of cricket in India in what we're doing. Please watch this video. Please subscribe, and we will talk again later. Thank you. So yeah, bye bye. Bye.